There's news, there's sense, and there's nuisance. This show is all about that last bit. Here's what happened in many of our Hindi TV newsrooms this week. Take a sneak peek. Reporter, I want scoop. मैम आपको coup चाहिए? A scoop. Coup? A scoop. Coup? A scoop. Coup? A scoop. मैम, एक सोशल मीडिया से coup मिला है. चलेगा? Scoop. Coup from social media. चलेगा. As many things that become breaking news on TV news, this one too started from a social media rumor. But we'll come to that later. First, the scoop. I mean, coup. जिनपिंग हो गए गायब. क्या चीन के सबसे शक्तिशाली शख्स प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का वाकई तख्ता पलट हो गया है? चीन में तख्ता पलट की तैयारी, काउंटडाउन शुरू. क्या चीन में जिनपिंग के खिलाफ अंदर ही अंदर दहक रहा बगावत का लावा फटकर बाहर निकल गया और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई? पीएलए की शपथ, चीन में तख्ता पलट. हमारा खास शो तांडव, जिसमें आज बात होगी चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के राज में लगी आग की. किसमें लगी आग? What am I hearing on TV news? जिनपिंग के राज में लगी आग की. ये नेशनल टीवी न्यूज में क्या क्या सुनने को मिल रहा है? क्या बोल रहे हैं यार ये? राज में लगी आग की. I give up. I can't understand what he's saying. हमें तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा. लेकिन अगर आप लोगों को समझ आए तो कमेंट्स में जरूर हमें लिख के बताइएगा कि ये जी हिंदुस्तान का संस्कारी एंकर क्या बोल रहा है. आगे टाइम्स नाउ देखिए. क्या चीन में सेना ने तख्ता पलट कर दिया है? क्या शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है? क्या जिनपिंग अब चीन के राष्ट्रपति नहीं है? नो सरप्राइजेस दैट ये टाइम्स नाउ वाले टावरिंग न्यूज पर्सनालिटीज न्यूसेंस टीम को लीगल नोटिस भेजते रहते हैं. सटायर इनके पल्ले ही नहीं पड़ता. A German news correspondent did a detailed thread on Twitter, which was basically to make fun of all the China coup rumors on social media. This was supposed to be satire, joke, mazak. Elite paratroopers have wrested control over the gate, cunningly disguised as the 5 middle-aged dudes who always stand there. Yeah, वो joke था, much like many of our TV news channels. बीजिंग में सेना के मूवमेंट की तस्वीरें सामने आई हैं. शिनुआ गेट की एलीट फोर्स तैनात है यहाँ पर. जिनपिंग के घर के बाहर सेना तैनात कर दी गई है और चीन में तख्ता पलट की जो अटकलें इन तस्वीरों से, इन खबरों से अब तेज हो चली हैं. सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है कि वहां पर अब सारे अधिकार शी जिनपिंग से छीन लिए गए हैं. हम एक्सक्लूसिव तस्वीर चला रहे हैं. ये जिनपिंग के घर के बाहर की तस्वीरें. वहां पर दरअसल हथियारबंद सैन्य कर्मी मौजूद हैं. उसके बाद इन अटकलों को और बल मिला है कि शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है. There is no smoke without a fire. बगैर आग के धुआं नहीं उठता. जरूर दाल में कुछ काला है, बहुत काला है. चीन के लोग परेशान हो चुके हैं. बाकी सब आए भारत से पीछे क्यों रहे? हमने अलग अलग सोर्सेज से डिटेल इकट्ठा करके एक रिपोर्ट बनाई है. इस रिपोर्ट से चीन में संभावित तख्ता पलट की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी. मोहर लायक हमने अलग अलग ट्वीट्स और अलग अलग सोशल मीडिया रूमर्स को मेहनत से इकट्ठा करके ये रिपोर्ट बनाई है. चाइनीज सोशल मीडिया पर यह मैसेज तेजी से फैल रहा है. सोशल मीडिया पर सनसनी मची हुई है. कई दिग्गजों ने शेयर की है चीन में तख्ता पलट की खबर. इस वीडियो को जेनिफर जैंग नाम की एक महिला ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे ही तमाम संदेशों से भरा पड़ा है. सोशल मीडिया लगातार शी जिनपिंग के सत्ता से हटाए जाने की बातें कर रहा है. जेनिफर का ट्विटर पोस्ट, क्या कमाल की खोजी पत्रकारिता है. सो हार्ड टू लॉग ऑन टू ट्विटर, then find Jennifer, then find her tweet, and then make news on it. Of course, you got to add a little bit of Modi to this and a bit of mind reading. Jinping के मन में क्या चल रहा है, न्यूज चैनल्स को पता है. एससीओ समिट के दौरान नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की नजरें तो मिली, डायरेक्ट बात नहीं हुई. जिनपिंग ने पुतिन से मुलाकात तो की, लेकिन क्या उनका दिमाग उस वक्त वहीं था या कहीं और ही था? एससीओ समिट के दौरान जिनपिंग के हाव भाव की इस तस्वीर से यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि चीन में कुछ तो गड़बड़ है. कैमरा हर बड़े नेता के चेहरे से गुजर रहा है, लेकिन जब शी जिनपिंग के चेहरे के पास से ये गुजरा तो उनके चेहरे पर एक तनाव दिख रहा था. चेहरे पे तनाव? That's just him. Have you ever seen him having a good time like our Prime Minister? That's just not how you rule China. You can't just have fun.
जब वो समरकंद में थे तो उनके देश में क्या हो रहा था, उनको कुर्सी से हटाने का प्लान तैयार हो रहा था। जिनपिंग थे तो बीजिंग से करीब 4000 किलोमीटर दूर समरकंद में, लेकिन उनका ध्यान चीन में ही लगा था। मोदी जी की मन की बात सुनते सुनते टाइम्स नाउ नव भारत वाले माइंड रीडर्स बन गए हैं। मोदी जी क्या, इनको अब जिनपिंग के मन के राज भी पता है। इतना तो तय है कि कोई आग है जिसका धुआं नजर आ रहा है। हाँ, ये वही आग है जिसके धुएं में टीवी न्यूज हर रात फैक्ट्स को उड़ा देता है। नाउ क्रेडिबल सोर्सेस तो हो गए, फैक्ट बेस्ड रिपोर्टिंग भी हो गई। नाउ यू नीड सम एक्सपर्टीज बाय सम एक्सपर्ट्स ऑन टीवी न्यूज। मिलियंस ऑफ चाइनीज बहुत खुश थे ये खबर सुन के कि पिंग पोंग, जो भी उसका नाम है, टिंगलिंग डिंगलिंग जो भी उसका नाम है, उसका तख्ता पलट दिया गया था। ये जो नाम लिए हैं हमारे प्रोफेसर साहब ने, ये टोंग छांग बांग छांग गुन खातो था पो थोपो, टोंग छांग बांग छांग गुन खातो था पो थोपो। What the fuck am I watching? Is this news? जो ऑर्डिनरी चाइनीज सफर कर रहा है उसकी छवि जो खत्म हो चुकी है सर, उसका जिम्मेदार केवल ये पिंग साहब है। सब चाइनीज लोगों को कहना चाहिए दुनिया में एक भगवान है, वो है पिंग पोंग। ये पीएलए को बहुत पुश कर रहा था। पिंग पोंग को मिलिट्री का कोई तजुर्बा नहीं है। Tingling, ping pong. Not only is that racist, ignorant and idiotic, that's your China expert on TV news. This guy has been the ambassador to Armenia, Sudan and Poland. God help Indian diplomacy. Needless to say, this really took us to a very dark time. Kui Kang, captain of the Shanghai Brigade, Huang Mu, first lieutenant, Zhongwei Brigade, Peng Guiwing, first lieutenant, Zhongwei, Shaoxia, sergeant major, Yi Jun Ji Shang Brigade, and Wu Tao Yi Kong He, yes, Zi Yong Gu Kang. Even though China is the enemy country, I'm really offended on their behalf. The technology review at MIT investigated how this China coup rumor went viral on social media and made it to Indian TV news. Once the coup rumor spread on Indian Twitter, MIT found out which Twitter handle was number 1 in spreading this rumor. Guess which one? Yes, it's a news channel. India TV. Of course. One analysis of over 32,000 Twitter interactions by Mark Owen Jones, an assistant professor at Hamad bin Khalifa University in Qatar, who researches disinformation and digital media, shows that at India TV News, the account of the Indian nationalist TV channel is the largest disseminator of the coup rumor. मतलब अगर चैनल के बॉस ही ऐसे हो तो क्या ही बोले। तो मैंने पाकिस्तान के पार्लियामेंट की इस कार्रवाई के वीडियोस को कई बार देखा और फिर पाकिस्तान में मौजूद कुछ लोगों से इसे कंफर्म किया और यह हकीकत सामने आई कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी को कई बार याद किया गया, उनके नाम पर कई बार नारे लगे। This is where we are. Indian TV news getting global attention for spreading total fake news and not even apologizing about it. My favorite bit though was this. हमारी टीम ने इन तमाम दावों की आज गहन पड़ताल की है और इस दौरान हमें यह पता चला कि शी जिनपिंग को नजरबंद करने की खबरें पूरी तरह से गलत हैं। धन्य है सुधीर जी की टीम, सब चीजों की जांच की। थैंक यू। Good try, but I think the German reporter who unknowingly started this had a better thing to say. Two things are infinite: the universe and man's stupidity. गजब बेइज्जती है। काफी बेइज्जती। Now, the big story this week was the ban on PFI. दशहरे से पहले PFI दहन अब किन लोगों को नहीं है सहन। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है आज। हमने इसी ब्लैक एंड व्हाइट शो में PFI पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की थी और कल भी हमने आपसे यही कहा था, अगर आपने हमारा कल रात का शो देखा हो, कि हमारी ये मुहिम तब तक रुकेगी नहीं जब तक PFI पर बैन नहीं लग जाता। इसलिए आज हमें बहुत खुशी है। थोड़ी देर से ही सही, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन करते हुए PFI पर पाबंदी लगा दी गई है। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों पर सर्जिकल स्ट्राइक हो या देश तोड़ने वाली गतिविधियों में लिप्त होने का आरोपी PFI एक्शन दिखता है। मोदी देश को झुकने नहीं देंगे। Bye bye PFI. The Home Ministry in a notification said that the Popular Front of India and its affiliates have been banned for 5 years. The MHA mentions the murder of 5 Hindutva activists to make its case.
It also mentions 6 other murder cases from Kerala and Tamil Nadu. States like Uttar Pradesh, Gujarat and Karnataka had written to MHA saying ban PFI because it's promoting radicalization. PFI members have been named in 1,300 criminal cases across the country. There are 4 key accusations against the organization. 1 is spreading radicalization. 2nd is link with banned terror networks. 3rd relates to economic offences. And of course, there are the murder cases. For now, the PFI has accepted the ban. There are some important issues we need to look at. PFI as an organization has received little support from any of the major political parties. In fact, here's what Owaisi said. While I've always opposed PFI's extreme and radical approach, I've always supported the democratic approach. This ban on PFI can't be supported as the actions of some individuals who commit crimes doesn't mean that the organization itself must be banned. We will come back to this last bit later. Now, some opposition parties and some Muslim organizations have also welcomed the ban. The main problem seems to be that you cannot have an organization claiming to fight radical Hindutva through radical Islamism. Violence in the name of Hinduism cannot be fought through violence in the name of Islam. This is why PFI today finds itself isolated. If PFI does have links with banned terror organizations like these two, then it's a serious threat for India. And the NIA now must probe very specific charges against the organization. But if Arnab had his way, you can just throw out the specifics and declare war. Wokes who don't understand what this country is about cannot run this country. Arnab, wokes aren't running this country. This man is running the country. And he's far from woke. The right-thinking people of this country must become more vocal. The right-thinking nationalists in this country must become far more assertive. Right-thinking Indians are assertive. Just turn on the prime time every night. Anyone associated with a PFI should be arrested and picked up. There has to be biometric tracking, face recognition of every PFI supporter. Nobody should be spared. And also every ex-supporter. Nobody should be spared. And also every ex-supporter. Every supporter and ex-supporter should be tracked and should be jailed. Anyone associated with PFI should be jailed. For a journalist who hates the commies, Arnab sure seems very inspired by Stalin. For many reasons, Arnab, another journalist arguing for a total purge, is pretty dangerous for a democracy. For starters, we still don't know if the murders committed by PFI members are individual acts of crime or if they're a planned strategy of the group. For example, if someone from your office kills someone, your entire office will not be banned unless it's proven that every day in your office you're being given orders to go out and kill people. A clearer example, 23 years ago, Bajrang Dal activist Dara Singh murdered Graham Stein and his 2 children who were sleeping by burning them alive. Dara Singh is in jail, but Bajrang Dal was not banned because it's not been proven that Bajrang Dal as an organization backed and planned the murder. By the way, guess who's leading the Justice for Dara Singh campaign in 2022? अब हम दारा सिंह जी जिनको कि 21 वर्षों से जेल में रखा है, इस देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इतने लंबे समय तक जेल में रखा गया है और उसको छोड़ा जाए ऐसे लोगों को जिनका 10 वर्ष पूर्ण हुआ. Yes, this man who supports the release of a murderer was spotted with RSS top boss and he also gets ads from state governments. So, can I correlate and say Mohanji and Yogiji support the murder of Graham Stein and support Dara Singh? I can't. That's a bit unfair, though I can't shame them for associating with this man. Similarly, this man was killed by this man who was once the ex-supporter of this organization. This organization was banned for a few years, but then they got to clear their name and today they are part of the governing elite in India. So, action against PFI has to follow proper laws, ड्यू प्रोसेस एंड एन एविडेंस बेस्ड अप्रोच. ये नहीं कि भाई शाहीन बाग पसंद नहीं है तो बीच में पीएफआई को घुसेड़ दो, फार्मर्स प्रोटेस्ट पसंद नहीं है तो पीएफआई का नाम ले लो, मोदी जी के क्रिटिक्स पसंद नहीं आए तो उनको पीएफआई के सपोर्टर बोल के जेल में डाल दो. अर्नब, डोंट बिकम व्हाट यू हेट. मीनवाइल न्यूज़ वालों, तुम्हें पीएफआई पसंद नहीं है तो थोड़ी इन्वेस्टिगेशन कर लो, रिपोर्ट कर लो. फेक न्यूज़ का सहारा क्यों ले रहे हो?
from one of the protests undertaken against the raids conducted, Pakistan slogans could actually be heard at a PFI rally in Pune, in the state of Maharashtra. Nobody shouted Pakistan Zindabad slogans. This is utterly false. Pratap Mankar, Senior Police Inspector, Band Garden said. Their slogan was Popular Front Zindabad. There's no proof so far that PFI chanted Pakistan Zindabad slogans. Any news on PFI should be based on facts and credible sources. And you should read newspapers like the Indian Express and the Hindu, and watch channels like Lallan Top, who give you a fact-based assessment on PFI and its activities. इस मामले में टीवी न्यूज़ जितना कम देखें उतना ही अच्छा है. Meanwhile, the government's actions should also be fair and neutral. If you're cracking down on radical Islamists, you must crack down on radical Hindutva organizations. When an RSS guy says VHP and RSS was setting off bombs, his claims should be reported and investigated. When Bajrang Dal and VHP garlands convicted rapists in the Bilkis Bano case, we should ask ourselves who is responsible for radicalizing the country, who is spreading hate in India. If the Modi government is serious about countering radicalization, it cannot stop at PFI. इस हफ्ते के बेस्ट CGI अवार्ड मिलता है रिपब्लिक भारत को. आपको बताते हैं कि आखिर ऑपरेशन ऑक्टोपस है क्या. PFI के खिलाफ ED और NIA का ऑपरेशन है ऑपरेशन ऑक्टोपस. ऑक्टोपस तो ठीक है, लेकिन आई थिंक इस हफ्ते कुछ और किया इन लोगों ने. ये आप देख रहे हैं. छिपकली के नाना and छिपकली के ससुर. Trivia: the lyrics of this song are by Gulzar and the music is by Vishal Bhardwaj. That's all the nuisance we have for you this week. We'll be back next week. Until then, stay mad. That's the only way. Thank you so much, guys, for watching this episode. If you liked it, then please share it with your friends and family and comment and tell us what that Zee Hindustan guy was saying. We have a very special event coming up this month on the 14th and 15th. It's called the Media Rumble. And this event, which is held in New Delhi, you get to meet a lot of journalists. You get to be part of some really interesting, engaging conversations about journalism, about media, about politics, and also about the movies. If you're in Delhi, please come and catch it. And if you're out of Delhi, then it's over the weekend, so you can fly down or train down or bus down to Delhi and attend the Media Rumble. Log on to themediarumble.com to register for this event. And if you're a News Laundry subscriber, this event is free for you. So you can also become a News Laundry subscriber and you can come to this event for free because it'll be open to all of you. And of course, you can meet the News Laundry team, you can meet the Tiffany team, the Newsance team, and everyone who makes the shows happen. So not only do you get to listen to interesting conversations from journalists and media entrepreneurs and politicians and also people from the movie industry, you can also catch the News Laundry team in New Delhi. So please register and come.